What do you do when you heard something fall in the office? Fall in middle of the night. Sorry. What do you do when you heard something fall in middle of the night while you are in the bed? Okay, what do you do? Well, probably is this thing. Okay, this question is actually related with the kind of like a something really horror. Okay, and yeah, basically I am scared of horror movies. Yes, but let me tell you one thing now कि यूजुअली मैं फिल्मों के भूतों से डरता हूँ. ओके, I never really kind of like a scared of real thing. Okay, so what is actually the real thing and what is actually the okay? So let me tell you one thing. फिल्मों में जिस तरह से इन द हॉरर फिल्म जब भूत आता है तो यू आर नॉट जस्ट स्केयर्ड बिकॉज ऑफ द मूवी. Like you are not just scared because of the that ghost. No, you actually scared because of the sound effect, you actually scared because of the music, you actually scared about that visual effects. Okay, अगर भूत अगर आत्मा या वट एवर द थिंग्स इज एक्चुअली एग्जिस्ट. ओके, तो वो आवाज़ तो नहीं करेगी ना. जस्ट जस्ट इफ लाइक जस्ट डू वन लिटिल एक्सपेरिमेंट. ओके, just watch the same horror movie that you watched previously, and but you just have to watch this movie on mute. Okay, just turn on the subtitle and that's it. Just watch the movie without sound, and trust me, you will not scared at all. Definitely not scared because of that. Ki scared is actually like a scared is a kind of like a something really feeling, and that feeling that you experience when you heard some sort of music and things like that. Just example is that कि हमें डांस करने में मज़ा आता है बट हम तभी डांस करते हैं जब म्यूज़िक चलता है. We won't be able to do dance unless if the music is not turned on. So this is kind of like a some sort of human emotions, and usually those are the human emotions are connected with the music. Okay, जिस तरह से हमें म्यूज़िक चाहिए डांस करने के लिए, उसी तरह से हमें म्यूज़िक चाहिए डरने के लिए. एंड इफ़ वी जस्ट रिमूव दैट म्यूज़िक देन ऑब्वियसली वी वोंट बी एबल टू स्केयर. एंड रियल लाइफ में कोई म्यूज़िक नहीं चलता. ओके, नो, रियल लाइफ में लाइक बेसिकली वी आर सैड और वी आर वट एवर द फीलिंग दैट वी हैव. तो लाइक वी डोंट रियली हैव दैट काइंड ऑफ लाइक अ बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चलता हमारे लाइफ. लाइक रियल में कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चलता ना. इट्स रियली नथिंग. ओके, तो अगर इन बिटवीन मिडल ऑफ द नाइट अगर कुछ लाइक मुझे आवाज़ सुनाई देती है कि कुछ गिर गया है या कुछ वट एवर थिंग्स हैपन, आई विल गो, आई विल लुक, आई विल सी दिस थिंग. मैं डरूंगा तो नहीं. ओके, बट मैं देखूंगा कि वट इज एक्चुअली हैपन. आई एम प्रॉबली फॉर श्योर इज दैट कि सम ऑफ द थिंग्स इज एक्चुअली हैपन बिकॉज ऑफ काइंड ऑफ लाइक सम सॉर्ट ऑफ थिंग. यानी बेसिकली अगर कुत्ता है तो कुल्ला या बिल्ली वट एवर इट इज़. ओके, but there are some sort of recommended answer. So the recommended answer means recommended action that what should you supposed to do. First of all, listen. Okay, should I supposed to do listen? Well, like basically is this thing कि if you wanted to do that much delay and if you wanted to thinking about that कि क्या होगा and then you start listening, then you are actually creating that kind of like assumption that कि हाँ there is some certain thing. Okay, uh, assess the situation. Still assess the situation means like that कि हमें एक तरह से सराउंडिंग सिचुएशन को देख कर एक्शन लेना चाहिए. एंड like those are the things, check the surrounding and then call the help and then take the precautions. Fuck this thing dude, it's just like that ना. मैं कतई नहीं करूँगा. हाँ, wait, if there is no horror, there is no ghost, but there is a thief, एक चोर है वहाँ पे, then what would you do? This is a really good thing. Okay, तो अगर ये चोर है तो आई जस्ट हैव टू बी मोर प्रिकॉशस. ओके, क्योंकि अभी चोर है तो माइट बी इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ समथिंग रियली नॉट गुड हैपन. तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि वट एवर द पीपल अराउंड मी, यानी अगर मेरे साथ कोई सो रहा है या मदर फादर पेरेंट्स वट एवर इट इज़. ओके, आई जस्ट ट्राई टू वेक हिम दैट कि हाँ किचन में कोई तो है. ओके, एंड जस्ट बी काम. ओके, देन इफ़ आई हैव अ फ़ोन तो दे मैं एक तरह से आवाज़ करूँगा या बेसिकली जस्ट टर्न ऑन द लाइट. ओके, फॉर माई सिक्योरिटी कि अगर वो चोर है तो वो एक तरह से भाग जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट. ओके, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर मुझे आवाज़ आती है और शायद वो चोर है तो प्रॉबली इफ़ आई वेक अप, इफ़ आई स्टार्टेड डूइंग सम सर्टन थिंग, लाइक बेसिकली मेरा पहला
the way of action that I should supposed to do is that I just try to prevent him. So I just have to prevent me from that thief. Okay, क्योंकि वो चोर है और वो कुछ भी कर सकता है. Like basically is this thing कि if I just wake up and directly try to approach that particular person, तो वो मुझे मार भी सकता है या मुझे हर्ट भी कर सकता है. सो इन दैट पर्टिकुलर वे आई जस्ट हैव टू प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम नॉट डूइंग सच अ थिंग. सो इन दैट पर्टिकुलर केस मैं लोगों को उठाऊंगा, मैं आवाज़ करूंगा, मैं लाइट लगाऊंगा. Then all those people will approach that particular way that this thing was supposed to be happen. And अगर चोर है तो वो भाग जाएगा, और वो भागने के लिए like if he's try to do some sort of threaten, तो I just have to do some sort of like basically अभी मेरे पास multiple peoples है ना. So I just have to try to do some sort of convince way or kind of like a something really that ki if I approach to the mobile phone, then I try to call 911 or kind of like a something really police to do some sort of report the emergency case that कि हाँ हमारे यहाँ चोरी हुई है वगैरह वगैरह वगैरह. And then during this particular situation I will kind of like a something really do exactly what the thief is wanted to say. When the cop is approached, then I just try to do this thing, because अगर पुलिस वाले आते हैं and if the chore is actually took kind of like a some sort of luxury stuff and away from house, so still we have kind of like a insurance that कि हाँ पुलिस के सामने या फैमिली मेम्बर के सामने ये सारी चीज़ें हुई है तो मैं इंश्योरेंस से वो सारी चीज़ें मैं वापस लेके आ सकता हूँ. एंड देन दैट फाइल इज़ एक्चुअली वेंट टू द कोर्ट, एंड फिर कोर्ट और पुलिस स्टेशन दे एक्चुअली ट्राई टू फाइंड दैट पर्टिकुलर थीफ एंड थिंग्स लाइक दैट. सो आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टफ. ओके, तो हाँ ये एक पॉसिबल वे टू अप्रोच है. बट स्टिल इफ़ यू डोंट वांट टू मिस दिस थिंग, तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आवाज़ करो एक तरह से काइंड ऑफ लाइक दैट कि उसे कहो कि इफ़ यू kind of like a something if you think that you are not kind of like a person that you could fight with that particular guy, so just try to tell him that he like I don't want to call the cops, but if you wanted to go, just go. I don't want to say anything at all. Okay, and in that particular case might be this would be happen. Okay, might be this could be kind of like a something really will. Okay, but important thing is that okay, first of all is that चोर घर में क्यों चोरी करेंगे. ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैसा तो बैंक में होता है ना, घर में तो बहुत कम पैसा होता है. एंड लिटरली ओके, क्योंकि राइट नाउ वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड. ओके, तो यूजुअली हमारे पास ना का बहुत सारे तरीके हैं पैसे सेव करने के. एंड यूजुअली मोस्ट ऑफ पीपल आर सेव इन बैंक एंड मोस्ट ऑफ पीपल एक्चुअली पुट द मनी ऑन डिजिटल. ओके, लाइक बेसिकली अभी वो ज़माना नहीं रहा ना कि जहाँ पे घर पे हम ताला लगा के सेफ में हम पैसा रखेंगे. यूजुअली नो, और घर में कुछ भी ऐसा पैसा वगैरह तो नहीं होता है, बट सम सडन थिंग इज़ दैट कि ज्वेलरीज होती है. ओके, एंड ज्वेलरीज के लिए हाँ दैट कुड बी काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. तो या बट इट्स जस्ट लाइक दैट ना, मे बी मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ द सच थिंग वुड हैपन, देन I should supposed to be kind of like that कि prevent me or prevent my family member from that thief or from that thing. Okay, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर मुझे कुछ नुकसान हो जाता है या देयर इज अ सम सर्टन थीफ इज एक्चुअली स्टूल और काइंड ऑफ लाइक अ स्टील सम सॉर्ट ऑफ मनी और ज्वेलरी एंड देन ही वेंट, आई एम काइंड ऑफ लाइक अ वेरी थैंक्सफुल दैट कि हाँ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेरे कोई भी फैमिली मेम्बर या मुझे किसी भी तरह से हानि या किसी भी तरह से इंजोर्ड नहीं हुआ. So this is kind of like a something like some sort of way, and how do we approach that particular way, it's a kind of like a depend on the situation. Okay, and basically is this thing ki would like it's a lot of things, dude. Okay, it's just kind of like that. Now you won't be able to think that ki what would happen and what would I supposed to do if such thing will happen. Okay, ये बहुत सारे तरीके होते हैं, this and that and that and that. The important thing is that कि just first of all is that the important thing that you have is a life that you have, and life the family that you have, that's it. Okay, and you just have to prevent that first. Okay, यही सबसे पहली जिम्मेदारी होते हैं. And for that particular life, if you have to like lower some sort of like money or just do that कि whatever the thief that you wanted to say. Yeah, क्योंकि इन द एंड ना यू हैव द इंश्योरेंस ना, इन द एंड ऑल दोज मनी और ऑल दोज इक्विपमेंट यू कैन काइंड ऑफ लाइक बेसिकली आप इंश्योरेंस से वो सारी चीज़ें वापस लेके आ सकते हैं. सो डोंट रियली वरी अबाउट दैट. ऑलराइट, या सो दिस इज इट, दिस इज देन. ऑलराइट, एंड थैंक यू.